वाट लग गई। अभी बस उठे हैं और अभी तो दिमाग थोड़ा चलना शुरू हुआ है कि भाई करना क्या है आगे। सो नाउ वी हैव प्लान टू गो टू अजंता और एलोरा केव्स। वहाँ से इंदौर के लिए निकलेंगे। ऑलमोस्ट सफ़र है 510 किलोमीटर का। बीड पहुँचते पहुँचते हमारे को लग गए थे रात के 12:30 एक। रूम ढूंढते ढूंढते फिर से लगा लो आगे 1 घंटा और लग गया। और द बॉडी वॉज रियली टायर्ड एंड दैट वॉज द बिगेस्ट इशू। ठीक है, अभी एटलीस्ट हमने 8 घंटे तो नहीं, 7, 7.5, 8 घंटे की नींद हाँ मार ली है। नाउ वी विल जस्ट टेक बाथ एंड विल शूट अगेन एंड या बट it was something to remember and I think let's see. I hope today's gonna be even more fun and we'll keep on posting. So if you see, we are packed, we are ready to go. आज भी अभी थोड़ा लेट हो गया। हमने सोचा, हम साले उठे ही 9:30 बजे थे. We got up at 9:30 and then we thought we'd leave by 10:30. It's almost going to be 11 right now, but then we were super tired. My eyes, my face is still swollen, but I think we'll just shoot directly towards Elora Caves right now and वहाँ जाके देखते हैं रास्ते में अगर कुछ खाने का भी मिल गया तो खाएंगे। हाँ, yeah, so yes, so right now we'll just leave the room. We are pretty late and see you. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie. But your problems are bigger than mine. Aurangabad, but it was super hot, mad hot. So we have just reached Aurangabad and it's very hot here. Another thing is कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर अभी, तो हम अभी वहाँ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एलोरा केव्स which is another 30 kilometers from here. So we have just stopped to take the charger, the 12-volt charger for the bike. It's really helpful because जब हम मैप यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है. The charge really goes off. Now we are really hungry also. आज थोड़ा लेट भी हो गए थे, तो now I'm thinking कि एक बार शहर से बाहर निकल जाएं, फिर कुछ खाते हैं. And hopefully Elora caves are open. I used to think कि Ajanta and Elora is the same thing, but Ajanta, I mean same thing as in कि पास में कुछ होगा, but Ajanta is another 70 kilometers from here. तो अभी तो इतना टाइम नहीं है, हमारे को इंदौर भी पहुंचना है रात से पहले. तो I will keep you posted and yes. So yeah, we just stopped near the jyotirlinga temple. Hey, तुम लोग को YouTube में आने का है? हाँ, आएंगे ना. हाँ, आएगा. ये देखो मैं तुमको रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी. क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम लखन. लखन. तुम्हारा? कृष्ण शिवाजी भालेराव. क्या बात है. तुम्हारा? उदय. उदय. चलो ठीक है, तो हम लोगों को YouTube में भी डालेंगे हम. चलेगा. ठीक है, चलेगा. थैंक यू. चलो. So now we have covered
100 something kilometers. We started from BEED in the morning, and that was around the total distance was 520 to Indore. Now Indore is 370 kilometers. On the way we wanted to see Elora caves, but then because of pandemic they are closed, and only thing we can do right now is continue our journey. But then the journey is fun in itself, and the bike has been actually performing well. We could see the 12th jyotirlinga of Shiva, which I never thought I would ever visit, but then it's already pre-written, and did enjoy it. Now let's see. I'll keep on vlogging. Now let me vlog on how the food is. See you. So उन्होंने हमारे सामने वहाँ खाना बनाया एंड ऑल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, मतलब स्मेल इतनी सही आ रही थी, मतलब खुशबू, नॉट स्मेल, but then it was really nice, and we did enjoy the food, especially the chicken flavors and the mutton quality. Food looks yummy. That is chicken. This is mutton. I don't know the name of the dishes, but how is it? Yummy. Okay, nice. तो ये साथ में तंदूरी रोटी दी है. अभी बाजू से वो लोग एक मस्त मिर्ची वाली चटनी मंगा रहे हैं, उस वाले बाजू वाले होटल से. Yeah, let's hog on. So I'm trying mutton with some naan, tandoori roti. लाइफ ऐसे खाओ हाईवे के बाद. I love the mutton. As in, not the flavors, but the way the meat is. Let me try some chicken. Wow, chicken has the yummy masala. Love it. Let me enjoy now. खतरनाक जाम है. You see till there? पूरा जाम ही उधर तक. वो देखो. मजे. यस, सो अभी हम कन्नड़ बोल के एक जगह है, उसके थोड़ा पहले खाना खा के निकले तो ये गौताला करके घाट है, और देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक जैम. इफ यू सी the mobile screen, it's all red and it's the jungle. Now अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, but if you notice, this place is brilliant. So we have just crossed Chalisgaon, and Indore is around 280 kilometers from here. The problem now is
The road is actually very bad, and the back is really getting tired. Not even the back, my bum is actually basically the tailbone, you know, when you're sitting and when you're hitting those potholes. Even in this dark, you cannot even see anything, and so that's the biggest thing right now. We have just stopped at a petrol bunk, and that's what's happening. So we thought we'll just drink some water, take some break, and then continue. After another 45 kilometers, the road's gonna turn out to be fine, it seems. Let's see. आगे तो रोड इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि नेक्स्ट 45-50 किलोमीटर्स में जान निकल गई. फाइनली वी रीच्ड अ प्लेस. पहुंच के पानी खरीदा, पानी पी के, चाय पी के, एंड देन वी लेफ्ट, एंड देन द रोड टर्न्ड आउट टू बी फाइन. So we have entered Madhya Pradesh finally, and there is little change in the weather. अभी ऐसे एक छोटे से ढाबे पे रुके हैं, चाय ले रहे हैं, थोड़े थक गए थे. तो then we just covered 120 or 30 kilometers, and now it is another 120 or 30 kilometers to MHOW, wherever we are heading. And yeah, मौसम में थोड़ा फर्क आ गया है और ठंडी थोड़ी हो गई है. अभी काफ़ी बढ़िया रोड मिल गई, इसलिए अच्छा डिस्टेंस कवर हो गया. तो अभी भी मेरे ख्याल से आगे तक का रोड तो बढ़िया है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. बाकी जो है वो देखते हैं आगे. अभी रात का टाइम है तो गाड़ी खींचनी भी इतनी सही नहीं है, बट एज आई मेंशन्ड बिफोर, वी हैव अ ब्रिलियंट व्हीकल, टच वुड, and it's been performing really well. We've been constantly maintaining. रात को भी अभी हम जितना आए हैं, we were doing a speed of 80 kilometers as an average. So yeah. तो क्या हुआ, चाय के साथ कुछ खाने को था नहीं. जब हम आए थे कोई भी नहीं था. तो अभी क्या है कि हमने चाय के साथ हाफ प्लेट आलू गोभी मंगाई, वो हम पेल दिए. तो फिर बाद में मन किया कि चलो रोटी खा लेंगे. जब तक रोटी आई, सब्जी ख़त्म हो गई, चाय ख़त्म हो गई. अब हाफ कड़ी पकौड़ा बोला है, वो लग रहा है तब तक चला हम रोटी भी ऐसे ही खा लेंगे. सो फाइनली हम इंदौर के लिए निकल पड़े. इंदौर के लिए निकलते ही द रोड वॉज वेरी नाइस, बट हिम्मत नहीं थी कि कुछ रिकॉर्ड कर पाएँ. ठंड भी हो गई थी. एंड वी रीच्ड अराउंड 12 o'clock इन द नाइट, जितना मुझे याद है. फिर उसके बाद वी रीच्ड महू. इंदौर इज़ अ ब्यूटीफुल टाउन. रात को ना कुछ देखने लायक था, ना कुछ रिकॉर्ड करने लायक था. पहुँचे और हिम्मत ही ख़त्म थी. वी रीच्ड द होटल एंड कुछ खाया पिया और बस सो गए. सो नेक्स्ट आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे फिर. थैंक यू.